મિત્રો, એસએન વિદ્યાલય દ્વારા સંચાલિત ઈ લર્નિંગ કાર્યક્રમમાં ફરી એકવાર આપ સર્વનું હાર્દિક સ્વાગત છે। એસએન વિદ્યાલય સાથે જોડાયેલા તમામ વિદ્યાર્થીઓને નવા વર્ષના હાર્દિક અભિનંદન। આવનાર વર્ષ સુખપ્રદ અને સારું સ્વાસ્થ્ય આપે એવી પ્રાર્થના સાથે આજનો આપણો ટોપિક એટલે કે તે દિવસે આપણે 8મા ધોરણની અંદર બે પેજ જોયા હતા हिंदी विषय में पेज नंबर 16 અને 17 અને પાઠનું નામ હતું અંતરિક્ષ પરિસુનિતા વિલિયમ્સ। पाठનો જે પ્રકાર છે એ જીવની છે। જીવની એટલે જીવન ચરિત્ર અને લેખક આપણા હતા તે કોકિલાબેન પારેખ। કોકિલાબેન પારેખ તે પણ ગાંધીનગર જિલ્લામાં તેમનો જન્મ થયેલો। 20 ડિસેમ્બર 2007 ના રોજ અમદાવાદ હવાઈ અડ્ડા यानी कि એરપોર્ટ ઉપર જ્યારે આ સુનિતા વિલિયમ્સ ઉતરે છે ત્યારે જાણે કે દેશમાં દિવાળી હોય એટલો આનંદ છવાયેલો હતો। તે સિવાય આપણે બે પેજની અંદર હાઇલાઇટ કરતા જોઈએ તો રાકેશ શર્મા અને કલ્પના ચાવલા એ આપણા પ્રથમ બે ભારતીય અંતરિક્ષ યાત્રીઓ હતા। તે સિવાય સુનિતા વિલિયમ્સ જે છે એનું ભારતીય હોવું એ આપણા માટે ગર્વની વાત હતી। તેના મૂળ ગુજરાત સાથે જોડાયેલા હતા કારણ કે એના પિતા જે છે દીપકભાઈ પંડ્યા તેમનો જન્મ મહેસાણા જિલ્લાના જુલાસન ગામમાં થયો હતો। પોતે એક ન્યુરોસર્જન એટલે કે મગજની અંદર જે સર્જરી કરવામાં આવે તે જાતે પેશાથી એક ડોક્ટર હતા અને તેમણે ઉર્સબાઇન બોની નામક યુવતી યુગોસ્લાવિયન યુવતી સાથે લગ્ન કરેલા। સુનિતાને નાનપણથી જ દોડ, સ્વિમિંગ, ઘોડદોડ એટલે કે ઘોડસવારી, બાઇકિંગ, પછી સ્નોબોર્ડિંગ એટલે કે બસની ઉપર જે આપણે સ્નોબોર્ડિંગ કરીએ છીએ બસની ઉપર ચાલીએ તે, એ સિવાય ધનુર્વિદ્યા એવા સાહસ ભરેલી જે રમતો હતી એમાં જ એને ઇન્ટરેસ્ટ હતો। અને એણે જ્યારે નીલ આર્મસ્ટ્રોંગ એટલે કે ચંદ્ર પર પગ મૂકનાર પ્રથમ વ્યક્તિ નીલ આર્મસ્ટ્રોંગને જ્યારે ચંદ્ર પર ઉતરતા જોયેલો હતો ત્યારે જ મનની અંદર એક ગાંઠ મારી લીધેલી હતી કે મારે અંતરિક્ષમાં જવું છે અને ત્યાં કંઈક નવું કરી અને બતાવવું છે। તેમણે એમની સાથે સહઅભ્યાસ કરતા એટલે કે એમની સાથે ભણતા મિત્ર માઇકલ વિલિયમ્સ સાથે લગ્ન કર્યા, જેને કારણે તે પંડ્યામાંથી સુનિતા વિલિયમ્સ બની અને કલ્પના ચાવલા અને સુનિતા વિલિયમ્સ બંને ભારતીય હોવાને કારણે બંનેને મ્યુઝિકમાં અત્યંત રસ હતો અને એ રસને કારણે જે બંનેને એક મિત્રતા અથવા તો એક સૂત્રમાં જોડી રાખે છે। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सन 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयन किया गया। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ किया। એટલે કે 1998 ની અંદર સુનિતા જે છે એ નાસા એટલે કે અંતરિક્ષમાં જવા માટે ચયન એટલે ચૂંટણી કરી એમાં એ સિલેક્ટ થઈ ગઈ હતી અને 1998 માં એ નાસા જવા કોઈ પણ મોટા મિશન ઉપર તમે જાઓ છો ને એટલે પહેલા પ્રશિક્ષણ લેવું પડે। પ્રશિક્ષણ એટલે એક વિશેષ પ્રકારની શિક્ષા। प्रशिक्षण विशेष प्रकार की अपरिचित शब्द समानार्थी शब्द के આપણે જે કહીએ તે। હવે પ્રશિક્ષણ એટલે કે તમે
બીએડ કરો છો, જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ બીએડ કરે છે તો એને ડાયરેક્ટ સ્કૂલમાં એપ્લાય નથી કરતા, ના, એને 3 મહિનાની ઇન્ટર્નશીપ આપવામાં આવે છે. ઇન્ટર્નશીપ એટલે તમને બાળકોને ભણાવવાનો અનુભવ, ત્યારબાદ જ તમને બીએડની ડિગ્રી આપવામાં આવે છે. એવી જ રીતે સુનિતા વિલિયમ્સને નાસા જવામાં સિલેક્ટ થઈ એટલે ડાયરેક્ટ નાસા નથી મોકલી દેતા, પણ એ નાસામાં જવા માટે એટલે કે ત્યાંનું વાતાવરણ અને આપણું વાતાવરણ કેવું છે, અલગ અલગ છે. અહીંયા ગુરુત્વાકર્ષણ બળ છે ત્યાં બિલકુલ નથી, અહીંયા આપણે જમીન પર ટકી શકીએ છીએ, ત્યાં નથી ટકી શકતા. તો એના માટેનું પ્રશિક્ષણ એટલે કે હવામાં તરતા કઈ રીતે રહેવું. બીજું, આપણે અહીંયા દાળ ભાત શાક રોટલી રાંધીને જમી શકીએ છીએ, પણ ત્યાં ખોરાક ખુલ્લો રાખવામાં આવતો નથી. ખોરાકને નાના નાના ડબ્બા અથવા તો પાઉચની અંદર એરટાઈટ કરી અને ભરી દેવાનો હોય છે કે જ્યારે ખોલો ત્યારે જ ડાયરેક્ટ મોઢામાં જાય, નહીતર તો હવામાં તરવા માંડે ખોરાક. તો એ માટેનું પ્રશિક્ષણ આપવામાં આવે છે. એ પ્રશિક્ષણનો નાસામાં જવાને કારણે તે આરંભ કરી દે છે. कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं है। આપણે ખાલી એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જઈએ છીએ ને તો આપણને રહેવામાં ત્યાં એડજસ્ટ થવામાં સેટ થવામાં વાર લાગે છે. તો આ તો આખું વાતાવરણ ચેન્જ થાય છે. જ્યાં ગુરુત્વાકર્ષણ બળ છે ત્યાં અને જ્યાં નથી ત્યાં, એટલે કે એકદમ ઓપોઝિટ બે સાઈડ છે. તો એવી જગ્યા પર ટકી રહેવું એ પણ એક ચુનૌતી કહેવાય, એક ચેલેન્જ કહેવાય. પણ એ ચેલેન્જ ઉપર આ સુનિતા વિલિયમ્સ જે છે એ ખરી ઉતરે છે. ગઈ વખતે અમે લાઈવ ક્લાસમાં એટલે કે સામે સામે વિદ્યાર્થીઓ હતા એ સમયે અમે સરસ મજાનો એક વિડીયો બતાવ્યો હતો વિદ્યાર્થીઓને કે નાસામાં સ્પેસ સ્ટેશનની અંદર આ લોકો કઈ રીતે રહે છે. તમને પણ કહું છું કે યુટ્યુબની અંદર નાસા કરી અને તમે સર્ચ કરશો તો તમને એકાદ બે વિડીયો જોવા મળશે કે સ્પેસ સ્ટેશનની અંદર લોકો જે જાય છે અંતરિક્ષ યાત્રીઓ કઈ રીતે રહે છે. એમાં લગભગ સુનિતા વિલિયમ્સે આખો એનો પોતાનો વિડીયો મૂકેલો છે. સુનિતા વિલિયમ્સ સર્ચ કરશો તો મળશે. એ કઈ રીતે રહે છે, કેવી રીતે ચાલે છે, શું ખાય છે, કેવી રીતે સૂવે છે, એ તમામ બાબત જે છે એ એમાં દેખાડવામાં આવી છે. એટલે તમને લાઈવ એનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ જોવા મળશે. તો આગ્રહ કરું છું કે એ જોજો જો શક્ય હોય તો. खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है. એટલે ખાલી રહેવું જ અઘરું નથી, નહાવું, રહેવું, ખાવું, પીવું બધું અઘરું છે ત્યાં. लौटने में मुश्किल होती है, आरंभ में चलने फिरने में दिक्कत होती है. શરૂઆતમાં કઈ પણ વસ્તુ આપણે એડજસ્ટ કરીએ છીએ થોડી તકલીફ પડે, પણ પછી આપણને રૂટીન લાગવા માંડે છે. તો અહીં દિક્કત એટલે તકલીફ. दिक्कत यानी तकलीफ. शुरुआत के दिनों में थोड़ी सी तकलीफ होती है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं. क्यों? तो कि वहां पर हम जमीन पर टिके नहीं रह सकते, हमें हवा में ऐसे हाथ पैर हिलाना पड़ता है. तो उसकी वजह से हड्डियां क्या करेगी, वो पेन करने लगेगी, दुखने लगेगी. तो उस समय हड्डियां क्या होगी, कमजोर हो जाएगी. दिमाग तैयार होने में समय लगता है. हम झट से कोई नई चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते. दिमाग वहां पर सेट करने के लिए हमें थोड़ा समय चाहिए होता है. सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया. એને ત્યાં જવા માટેનું પ્રશિક્ષણ એટલે કે મગજમાં પહેલેથી જ સેટ કરી લીધું કે મારે અહીંયા રહેવું છે, મારે અહીંયા ટકવું છે. એટલા માટે જેટલી મુશ્કેલીઓ આવશે તે બધી હું સહન કરવા માટે તૈયાર છું. જેમ કે સ્પેસ વોક છે એ કરવા માટે સ્વિમ કરવું જરૂરી છે. સ્વિમ તમે કરો છો એટલા માટે ત્યાં જે પગ ચાલે છે તે તમને ઉપર આકાશમાં જઈ અને એનો અનુભવ કામ આવે છે. તો એણે પણ પોતાની જાતને પ્રશિક્ષણ દ્વારા આ બધી તૈયારીઓ એટલે કે આ બધી ચુનૌતીઓ મારી સામે આવવાની છે એના માટે એણે એની જાતને ઓલરેડી અગાઉ તૈયાર કરી લીધેલી પ્રશિક્ષણ લઈ. वैज्ञानिक तकनीक भरे व्याख्यान रूस में रहकर
रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। એટલે કે એને જવાનું હતું ત્યારે રૂસમાં રહી અને ત્યાં કઈ રીતે વાતચીત કરવી, કઈ રીતે રહેવું, કેવા વાતાવરણમાં રહેવું, શું બોલવું શું ન બોલવું, એ બધું જ એ ભાષણો દ્વારા એણે અગાઉ બધું સાંભળી લીધું હતું। જેમ કે અત્યારે કેમ આપણને કંઈક મુશ્કેલી પડે આપણે તરત યુટ્યુબમાં સર્ચ મારીએ, ચલો આમ ટક 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 આવી ગયું, શું તકલીફ છે તો કે આ તકલીફ છે। એવી જ રીતે એણે પણ એ વખતની ટેકનોલોજી દ્વારા એ ભાષણો સાંભળી અને વિવિધ વૈજ્ઞાનિકોના મહાન વૈજ્ઞાનિકોના ભાષણો સાંભળી અને એણે એનું માઇન્ડ પહેલેથી જ સેટ કરી લીધેલું હતું। उनके गोताखोरी में अनुभव होने वाले भारहीनता से स्पेसवॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की। गोताखोरी यानी कि गहरे समुद्र में डुबकी मारना। समुद्र के अंदर डुबकी मारना, नीचे तल तक जाना और वहां पर टिके रहना। इसकी वजह से क्या होगा, शरीर बिल्कुल भारहीन यानी कि बिना वजन का हो जाएगा। इससे स्पेस वॉक यानी कि अंतरिक्ष में चलना, स्पेस वॉक। अंतरिक्ष में चलना आसान रहता है इस अनुभव के कारण। प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की। अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियां और मुश्किलों के बारे में जाना। वे अंतरिक्ष के संभावित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी थी। यानी कि प्रशिक्षण के द्वारा जो अंतरिक्ष में आने वाला खतरा है उस खतरे से वह भली भांति सूचित हो चुकी थी। यानी कि मुझे वहां जाकर क्या करना है, कैसे रहना है, कैसे जीना है, उसके माइंड में यह सब बातें क्लियर थी। यहाँ पर हमें एक मुहावरा मिलता है, खतरों से खेलना। खतरों से खेलना। खतरनाक परिस्थिति का सामना करना। यानी कि वहां पर जो मुश्किलें आने वाली थी इस बात से वह भली भांति परिचित थी। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही। यानी कि प्रशिक्षण के दरमियान सुनीता विलियम्स जो है सतत 9 दिनों तक पानी के अंदर डूबी रही। प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लगे। यानी कि आज बोला कि अंतरिक्ष में जाना है और कल निकल गए, ऐसे अंतरिक्ष में नहीं जाते। अंतरिक्ष का प्रशिक्षण लेने में उसे कुल 8 साल का समय लगा। डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से केनेडी स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि सुनीता स्पेस स्टेशन कब पहुंची तो 10 दिसंबर 2007 को अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की। यानी कि 10 तारीख को निकली थी, 17 तारीख को पहुंची। यानी कि 7 दिन का जो समय है उतना अंतरिक्ष में जाने तक लगा। और अंतरिक्ष में चहलकदमी यानी कि धीरे धीरे उसने चलना शुरू किया।
पृथ्वी से 360 किमी की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर थी। यानी कि ऐसा पूछे कि पृथ्वी से कितनी दूर, तो पृथ्वी से 360 किमी दूर। और अंतरिक्ष स्टेशन में पृथ्वी की जो गति है वो प्रति घंटे कितनी थी, तो 27,744। इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया। ऐसा नहीं है कि अंतरिक्ष में जाकर वापिस आ गई, पर जहां पर गई है वहां भी हमारे देश का नाम ऊंचा करके आई है। जैसे कि किसी ने न किया हो ऐसा काम किया। स्पेस वॉक का रिकॉर्ड पहले भी होगा, पर इस सुनीता विलियम्स ने उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। यानी कि सुनीता विलियम्स ने यहाँ अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था। अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2,967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। यानी कि जो स्पेस अड्डा है वह पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था, तो यह चक्कर के हिसाब से सुनीता ने पृथ्वी के 2,967 चक्कर अपने अंतरराष्ट्रीय प्रवास में लगाए। એટલે કે जो अंतरिक्ष में वो गई थी उसने इतने चक्कर लगाए। इस अभियान में सुनीता 29 घंटे यानी कि अंतरिक्ष में जब गई तब उसने 29 घंटे और 17 मिनट हवा में यानी कि स्पेस स्टेशन से बाहर निकलकर स्पेस वॉक की एक नई रिकॉर्ड बनाई, अंतरिक्ष में चलने की एक नई रिकॉर्ड बनाई। इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री भी बन चुकी। यह हुई स्पेस वॉक की बात। अब मैराथन दौड़, जैसे हमारे भारत या अलग अलग देशों में ऐसी मैराथन होती है जो हमें पृथ्वी पर रहकर दौड़नी है, पर यह अंतरिक्ष की मैराथन है जो आकाश में गुरुत्वाकर्षण बल के बिना हवा में उड़ते उड़ते दौड़ना है। तो यह दौड़ जो है वो 4 घंटे 24 मिनट सतत 4 घंटे 24 मिनट दौड़कर उसने मैराथन जीतने वाली सबसे पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी है। अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किमी का सफर काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री सुनीता ने अंतरिक्ष में 128 दिन और 4 घंटे के शैनॉन ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा। यानी कि उससे पहले भी किसी ने वहां पर रहने का रिकॉर्ड बनाया था, जो 128 दिन रहकर सुनीता ने उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया और 42 यानी कि 42 किमी दौड़कर उसने मैराथन दौड़ जीतने वाली प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री भी बनी। सुनीता का 6 महीने तक रहने का अनुभव है कि वहाँ व्यायाम करना बहुत आवश्यक है ताकि मांसपेशियों और हड्डियों की शक्ति बनाई रखी जा सके। सुनीता विलियम्स 6 महीना સુધી અંતરિક્ષમાં તો રહી, પણ અંતરિક્ષમાં ટકી રહેવા માટે શું જરૂરી છે? તો કે વ્યાયામ જરૂરી છે, કારણ કે ત્યાં જે હવામાં આપણે ઉડીએ છીએ અને જે શરીરનું જે સ્ટ્રક્ચર જે એનો ભાર છે એ ટકાવી રાખવા માટે આપણે શું કરવું જોઈએ? તો કે યોગ કરવા જોઈએ, કારણ કે યોગ જે છે એ આપણી સંપત્તિ છે, અમૂલ્ય સંપત્તિ છે, આપણને વારસામાં મળેલી છે। तो ત્યાં રહેવા માટે योग जरूरी है जो मांसपेशी और हड्डियों की शक्ति बनाए रखेगी। यानी कि योग के द्वारा जो हड्डियां है वो मजबूत बनती है, शरीर को लचीला बनाए रखा जाए, जैसा कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। योग एक केवा प्रकारना? तो कि साइकिल चलाता होय, दौड़ता होय, चालता होय एवा सादा सादा धीमा धीमा जेटला शक्य होय तेवा योग करवाना। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल, रोज डिब्बाबंद भोजन, भारहीनता, शरीर के लचीलेपन
तीव्र गति से खत्म होना, मांसपेशियां और हड्डी को तेज क्षति जैसी समस्याएं थी। यानी कि एक तो गुरुत्वाकर्षण खत्म होने के कारण जो हमारा शरीर है वो बिल्कुल ढीला हो जाता है, यानी लचीला हो जाता है, तो भार जो है शून्य हो जाता है, हमारे शरीर का भार शून्य हो जाता है। तो उस समय शरीर को अच्छा रखने के लिए योग जरूरी है। और अंतरिक्ष में सोने की सबसे बड़ी दिक्कत है, यानी कि आप चैन से सो नहीं सकते, सोओगे तो तैरते तैरते एक जगह से दूसरी जगह चले जाओगे। डिब्बा बंद भोजन, पहले ही बताया कि भोजन जो है वो एयर टाइट डिब्बे में या फिर पैकेट में होता है, बाहर निकालोगे तो वो तो हवा में उड़ने लगेगा। भारहीन शून्य भार वाला शरीर और लचीलापन, जो स्किन है वो एकदम ढीली सी हो जाती है। इसके कारण हड्डियों में जल्द से जल्द क्षति होनी शुरू हो जाती है। सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए। वहां पर रहते रहते भी उसने कई सारे कार्य किए हैं, जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी, डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया। એ પોતે એક સ્ત્રી છે, એટલે કે હ્યુમન લાઈફ સાયન્સ એ જીવ વિજ્ઞાન ઉપર, ફિઝિકલ સાયન્સ ઉપર, પૃથ્વીનું નિરીક્ષણ કર્યું। એ સિવાય કઈ ટેકનોલોજી વધારેમાં વધારે ચાલે છે, કેવું શિક્ષણ મળે છે ત્યાંનું, એ બધા જ વિષયો ઉપર એણે કામ કરેલું છે। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल न्यूट्रिशन के संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों तक पहुंचाए। यानी कि स्पेस के बाहर कई सारे जीव जंतु फिरते हैं, उन सभी जंतुओं का ब्लड जो है आकर जब स्पेस के साथ वो धक्का लगता है या जो खून निकलता है वो सब जमा कर करके वो नीचे लाई और वैज्ञानिकों को संशोधन के लिए दिया, क्योंकि वैज्ञानिकों को पता चले कि ऊपर अंतरिक्ष में कैसे कैसे जीव फिरते हैं। सुनीता ने कहा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है। स्पेस में से उसने देखा तो उसे गर्व हुआ कि हमारी जो पृथ्वी है वो बहुत ही शानदार, बहुत सुंदर है। दुनिया को अलग नजरिए से देखने का मौका और यह अंतर्दृष्टि मिलती है कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए। यानी कि उसके नजरिया यानी दृष्टिकोण। उसका जो दृष्टिकोण है वो अलग हो गया, क्योंकि पृथ्वी ऊपर से एक जैसी दिखती है, वहां पर कोई रेखाएं देखने को मिलती नहीं है। तो आने वाली पीढ़ी जो हम हैं और हमारे जो बच्चे, उनके जो बच्चे हैं, उन सब के लिए ग्रह, नक्षत्र आदि वस्तुएं कैसे बचाई जाए, जिससे उन्हें भी मालूम पड़े कि ऐसे ग्रह, ऐसे नक्षत्र भी हमारे देश, हमारी दुनिया में हुआ करते थे। तो आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए कैसे, उसका भी संशोधन उसने किया। अंतरिक्ष में मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवाद में उलझ रहे हैं। यानी कि उसने ऊपर से देखा पृथ्वी एक लग रही है और स्पेस में एक साथ काम करना, यानी एकजुट होकर काम करना, यह सुखद अनुभव था। और वो मन ही मन विचारती है, क्यों पृथ्वी पर आपस में सब लड़ रहे हैं, यह मेरा, यह तेरा। तो इस विवादों के उलझन से बाहर निकलकर एक नई सोच देती है। नई दिल्ली के अमेरिकी स्टेशन में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सवालों के जवाब देती सुनीता ने कहा, जब नई दिल्ली के ऊपर से अमेरिकी स्टेशन सेंटर में ये जो अंतरिक्ष यान है वो निकला,
यानी कि हमारे भारत पर से गुजरा, तब उसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कई लोगों से बातचीत की, कई लोगों के सवालों के उत्तर दिए। तो यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नजर नहीं आता। किसी ने पूछा होगा कि आपको स्टेशन यानी कि स्पेस स्टेशन में से पृथ्वी कैसी लगती है, तो उन्होंने जवाब दिया कि यहाँ से पृथ्वी एक भी हिस्से में बटी हुई नहीं लगती है, यानी कि वो पूरी की पूरी सीधी लगती है। यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़, आसमानी रंग के सुंदर महासागर, हरे मैदान, अनेक रंगों में जमीन दिखाई दे रही थी। यह दृश्य बहुत ही मनोहर था। એને કીધું સ્પેસ સ્ટેશનમાંથી મેં જોયું તો મને આ પૃથ્વી જે છે એક સરસ મજાનો ગ્રહ દેખાતી હતી। એ પૃથ્વી ઉપર અલગ અલગ રંગ, જેમ કે મહાસાગરનો રંગ સ્કાય કલરનો છે, ઝાડ પાનનો રંગ ગ્રીન કલરનો છે, કથ્થઈ કલરના પહાડ છે, નદી છે, નાળા છે, આવું બધું મને દેખાણું। ક્યાંય લાગ ભાગ દેખાણા નહીં કે આ પ્રદેશ મારો ને આ પ્રદેશ તમારો। એ જે દ્રશ્ય કે મેં ઉપરથી જોયું એ બહુ સુંદર અને મનોહર, મનને હરી લે એવું હતું। 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्री को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। एवो प्रश्न पूछाय कि स्पेस शटल कब वापस आया अथवा तो कब धरती पर लौटा, तो 19 जून 2007 स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्री, यानी कि उस समय 7 अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में गए थे। वो सभी अंतरिक्ष यात्री को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। भारत देश जे छे ए विविधतामां एकता वाळो देश छे, એટલે આ દીકરીનું પણ મૂળ ક્યાંક ને ક્યાંક ભારત સાથે અને ગુજરાત સાથે જોડાયેલું છે। એટલા માટે કલ્પના ચાવલા જે મૃત્યુ પામી હતી એવું ફરીવાર ન બને, એટલા માટે દેશના જે લોકો છે એ બધા એના માટે જીવિત પોતે પરત પાછી આવે એના માટે દેશ એકજૂટ થઈ અને પ્રાર્થના કરવા लाग्यो। जो અહીં આપણને એક એવો પ્રશ્ન બને કે સુનીતાને આખા વિશ્વની દીકરી શા માટે કહે છે, તો એ અંતરિક્ષમાં એના પોતાના પર્સનલ કામે નહોતી ગઈ, પણ એ આપણા ભારત માટે ગઈ હતી, ખોજ માટે। અને એણે ઉપરથી જોયું કે આ વિશ્વ છે એને તો કે લાખ ભાગવાળું ન દેખાડું કે આ ઓસ્ટ્રેલિયા છે કે અમેરિકા છે, ઇન્ડિયા છે ને આ સાઉથ આફ્રિકા છે, ના, ત્યાંથી તો એને પૃથ્વી ગ્રહ દેખાડો। એટલે એ તો દરેકની દીકરી થઈ, એ તો બધા માટે ગઈ હતી અને નવું નવું સંશોધન કરી લાવી હતી, એટલા માટે એને આખા વિશ્વની દીકરી કહેવામાં આવે છે। 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई। जता 7 दिवस वळता 19 तारीखे रवाना थयुं हतुं। कई तारीखे आव्युं? 22 तारीख, 19, 20, 21 ने 22, 3 થી 4 દિવસની અંદર સ્પેસ શટલ પાછું આવે છે। અને કુલ કેટલો સમય રોકાણી એવો પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે તો કુલ 194 દિવસ 18 કલાક અને 58 મિનિટ અંતરિક્ષમાં રોકાય અને એક નવો જ રેકોર્ડ સ્થાપિત કરી અને એ 22 जून 2007 ના રોજ પરત ફરેલી। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ है। अहींया आपणे एक मुहावरो मळे छे, सर ऊंचा होना। गर्व होना, गर्व होना, यानी कि उसका जो मूल है वो भारत से है, भारत में भी गुजरात से है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा। यानी कि अगर जो स्त्री को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है, यानी कि हमें अपना स्थान निश्चित करना है कि हम सर्वश्रेष्ठ स्थान पर रहेंगे,
तो हमें भी सुनीता की तरह साहस दिखाना होगा, खास करके हमारी बेटियां जो यह इस गद्य के माध्यम से, यह पाठ के माध्यम से जो सुनीता विलियम्स के साहस के बारे में सुना है, उस माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि अगर सर्वोच्च स्थान प्राप्त करना है तो कठिनाइयां कई आएगी, पर हमें डटे रहना है। साहसी और महत्वाकांक्षी नई नई चीजें हासिल करने की महत्वाकांक्षा अगर रखेंगे तो निश्चित है ध्येय हमें मिलकर ही रहेगा। ये खास करके बेटियों के लिए, अगर बेटियों को सर्वोच्च स्थान पर रहना है तो छोटी मोटी मुश्किलों से डरना नहीं है, डटे रहना है। ध्येय यानी कि लक्ष्य हमें अपने आप मिलता है, मेहनत करोगे तो लक्ष्य अवश्य मिलेगा। तो पाठ यहाँ पर, गद्य यहाँ पर समाप्त करते हैं। पाठ में आने वाले यानी कि आगे जो 2 पेज पढ़े थे उनमें से अपरिचित शब्द और मुहावरे लिए थे। आज हमने 2 पेज पढ़े, उसमें भी अपरिचित शब्द और मुहावरे लिए थे। क्वेश्चन की अगर बात करें तो जो क्वेश्चन है वो लगभग क्वेश्चन की हमने चर्चा की है। सुनीता ने अपने सपने कैसे साकार किए, तो विविध प्रशिक्षण के द्वारा, और साहस प्रशिक्षण में हमने देखा कि वह अनेक कठिनाइयों से गुजरती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, वहां पर स्थित होने में समय लगता है, गोताखोरी का अनुभव लिया। इसके अलावा अंतरिक्ष 9 दिन तक पानी में रही, तो इस तरह उसने अपने सपने पूरे किए। अंतरिक्ष यात्रा में किस प्रकार की मुश्किलें आती देखी, नहाने की, खाने की, रहने की, सोने की, सभी प्रकार की मुश्किलें आती है। तो पाठ जो है यहाँ पर पूर्ण करते हैं। नेक्स्ट पीरियड में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय भारत।